Hello everybody, this is Shivam Pandey and you're watching The Blink. So today is my first stream and हम अभी क्या करने वाले हैं? So हम today is 4th April 2022 and I'm going to read all the editorials on The Hindu newspaper. Okay, जो भी आज The Hindu newspaper में editorials आए थे, I'm going to read that. इसके पीछे का reason ये है कि I feel कि editorials are a great source of knowledge of what's happening around the world, and we all must know it. And second thing is, this is fun for me. So I'm just this is just treat it like a fun brainstorming session with me. Okay, so let's without further ado and without much talking, let's start reading. Okay, I hope you enjoy all this. So now let's see what's going on. So this is an editorial playing the strategic autonomy game. Okay, this is Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and this is our PM Modi playing the strategic autonomy game. This is written by Happy Man Jacob, and let's see क्या है इसमें. So New Delhi should play its cards extremely well right now to invest in future geopolitical dividends. सही बात है. So let's read. Russian invasion of Ukraine has led to a flurry of diplomatic activity in New Delhi. Some visitors came to test the waters, some to discuss life beyond Ukraine, some to seek solidarity with some others to issue veiled warnings. Just give me 1 second. मैं एक बार check कर लूँ कि सब कुछ सही चल रहा है. Am I live ठीक से? Yes, I am. एक सेकेंड मैं अपने फोन से चेक कर लूँ. Just give me 1 second. Yes, I am live. Please 1 second. फिर मैं अपने फोन से चेक कर लूँ. Yes, everything is good. Okay, so the Russian invasion of Ukraine has led to a flurry of diplomatic activity in New Delhi. Some visitors came to test the waters, some to discuss life beyond Ukraine, some to seek solidarity, and some others to issue veiled warnings. न्यू दिल्ली हैज बीन ये इशू वेल्ड वार्निंग्स. मेरे ख्याल से ये उनके बारे में बात हो रही है. अभी जो यूएस के कौन आए थे, आई डोंट रिमेम्बर अभी. यूएसए से हाँ इंडियन ओरिजिन के ही थे वो. उनका क्या नाम था? इंडियन ओरिजिन के यूएस सेनेटर थे मेरे ख्याल से, एंड ही केम टू इंडिया. So what, however, New Delhi has been forthcoming and patient. What, however, hasn't gone down very well in India is the public chastisement of its Russia policy. That is the decision to continue its trade with Russia and unwillingness to condemn Russian aggression. They are saying chastisement का मतलब, let me see अच्छे से to better understand this statement. Okay, so they are just saying that Indian public is not liking the Russia policy of government, or Russia policy ये कि decision to continue its trade with Russia and unwillingness to condemn Russian aggression. I seriously a little bit disagree with this statement, because a public chastisement around the world, it's true, around the world, different countries, the US and everybody is criticizing India on its Russian policy, but not Indians, because we understand why India has aligned. There is a why, there is a reason. It's not very abrupt, out of the box, nothing like that. So it appears that several visitors to New Delhi miss a crucial point. India is not in Europe, even if it shares, despite the occasional aberration, many of the norms and values held dear by much of the international community. Exactly, this is talking about this public chastisement. They are talking about the world. Okay,
दुनिया के जो बाकी देश हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट ही इज सेइंग राइट, आई एग्री विथ हिम कि several visitors to New Delhi miss a crucial point. India is not in Europe. India is not in Europe, okay? So even if it shares, despite the occasional aberration, many of the norms and values held dear by much of the international community. More importantly, notwithstanding the Indian diaspora in the West and the warmth of people-to-people contact, India is a post-colonial country with understandable sensitivities about how Western interlocutors engage the country. Okay, so this is a bigger game than this. Ki Russia has attacked the country, an innocent country. It's a bigger game than that. You know, US ने Cuba में Russia was Cuba is a country just below US, okay, in South America, not South America, Central America, and वहाँ पर Russia was building their nuclear base and everything around 50 years back, 50, 60, 70 years back, and उस वक्त because Russia has come close to United States वहाँ पे they raised a war, ठीक है, basically, and they just उन्होंने रशिया को वहाँ पे force किया कि वो वहाँ से जाए. So now why is it wrong when Russia is doing the same thing? But still, let's see. More so, it is unfair to ask a developing country fighting serious economic hardships and recovering from the debilitating impact of COVID-19 not to buy discounted Russian oil. Exactly. Especially when some of India's critics are still buying energy from Russia, discounted or not. Exactly. You know, Germany is still the biggest buyer of energy from Russia. Okay, but they are like criticizing us for buying discounted oil. Not true. Not right. Several Western policy commentators are aghast as to why India is unwilling to endure some economic pain to send a loud and clear message that it does not support territorial aggression by any country. The answer once again lies in the state of India's economy, its need for unrestricted supply of defense equipment, and its geopolitical location. Yes, its need for unrestricted supply of हमारे defense equipment में we depend on Russia like बहुत अच्छे खासे उसके लिए. So there is little doubt that the Ukraine war will impact the Indian economy, slowly perhaps, but steadily for sure. Yes, Ukraine war will impact, is impacting यार. अभी कुछ दिन पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला पार्लियामेंट में कि पेट्रोल के प्राइसेस जो पिछले 12 दिनों में कुछ 11-10 या 11 रुपए अब तक बढ़ चुके हैं, या शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, कुछ 8 रुपए बढ़े हैं. सो इट्स स्टिल बिग, एंड वो एफएम हैज सेड कि वो यूक्रेन वॉर की वजह से ही है. So, unfortunately for India, the sanctions on Russia have come at a time when the Indian economy is still recovering from the impact of COVID-19. The strawman arguments. Everything is going good. The strawman arguments. One of the arguments that is emphatically made by several of India's partners in the West is that the Russia-Ukraine war is a broader conflict between democracies and non-democracies, and therefore India must decide which side of the ideological divide it wants to be on. Okay. This is not just a baseless myth, but a dangerous trope that can plunge the international community into another needless ideological rivalry. This is not something that New Delhi should get caught in. Russia's military aggression is unjustified, and India's decision to abstain from condemning Russia is based on a geopolitical rationale, just like India did not condemn the American invasion of Iraq in 2003. It has nothing to do with India being any less of a democracy. Exactly. You know, West is trying to make it sound like this is democracy versus non-democracy, but it is not like that. Several countries have, we have, just like it is telling India did not condemn the American invasion of Iraq in 2003. We did not. तो उस समय because हम अपने groupings को choose कर रहे हैं इस समय, और पहले 2003 में भी हमने अपने geopolitical rationale के base पर, ठीक है, कि हमें कहाँ किस ग्रुप में रहना है, वो हम अपने इंसेंटिव्स और अपने एडवांटेज प्रोस कॉन्स को मेजर करके फिर कर रहे हैं. ये ऐसा नहीं है कि इफ वी आर नॉट कंडेमिंग रशिया तो वी आर सपोर्टिंग अ नॉन डेमोक्रेटिक वे, ऐसा कुछ भी नहीं है. Second argument is that Russia is unlikely to help India in a future conflict with China. This argument is not without merit, but then again, it misses the point. Russia may not help India against China in the longer run, but India certainly cannot afford to have yet another unfriendly country in an otherwise deeply unfriendly region. And that is sound strategic rationale for not alienating Russia.
This argument also implies that the West may not stand by India when it comes to China if India doesn't stand by them today. This argument overlooks the reality that China is a challenge to the US as well as to India, albeit in varying degrees. India needs the assistance of its partners to meet the China challenge, but this is hardly a one-way street. Exactly. Now they are saying कि ये चीज मैंने भी बहुत बार सुनी कि लोग कह रहे थे कि रशिया का सपोर्ट करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि रशिया और चाइना इतने क्लोज फ्रेंड है कि अगर चाइना और इंडिया की कभी लड़ाई होती है तो रशिया इज नॉट गोना सपोर्ट अस. दैट इज ट्रू, मे बी दैट इज ट्रू कि रशिया विल नॉट सपोर्ट अस इन अ वॉर अगेंस्ट चाइना. बट द थिंग इज, हम if we are condemning Russia right now, so we are becoming a enemy of Russia also, and then we have yet another again, another unfriendly nation in our neighborhood again. In Asia, there's already a big power China, and there's another big power Russia, and हम उनसे भी unfriendly हो. This is not in favor of India. First thing. Second thing is, I really doubt if Western countries will help India against China. They will also not, because if अगर वो करते तो अभी कोई किसी की हेल्प नहीं करता है. श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? म्यांमार में रातों रात कू हो गया, मिलिट्री कू, और वहाँ की प्रेसिडेंट को उन्होंने 4 साल की जेल में डाल दिया फॉर क्या वायलेटिंग कोविड नॉर्म्स. कौन देख रहा है इसको? कोई अब कुछ नहीं करता है. अफगानिस्तान में तालिबान इज रूलिंग अ कंट्री, हु इज डूइंग, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग. एंड ऐसे ही होता है, मतलब कोई कुछ करता नहीं है. यूक्रेन को वेस्ट ने, यूक्रेन इज द बिगेस्ट एग्जांपल. वेस्टर्न कंट्रीज एश्योर्ड यूक्रेन, एवरीबॉडी नो द स्टोरी, एंड व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन एवरीबॉडी इज सीइंग. सो ऐसा हम किसी पर रिलाय हो ही नहीं सकते हैं. हम बस अभी यहाँ पर यही देख सकते हैं कि बेटर क्या होगा. वी शुड नॉट हैव एन अनफ्रेंडली नेशन अगेन हु हैज बीन फ्रेंडली टू अस इन द पास्ट. सो दिस इज द थिंग. Charms of the swing state. And this is also India's big power moment. The fact that both the opposing sides in this war are rushing their senior interlocutors to New Delhi to woo India also shows that India is the most sought after swing state in the contemporary international system. A role it has played well so far. Okay, let me just for once to better understand what's a swing state. I guess a swing state. Let me see. Levels of support. Okay. Swing state means the state that is like क्या कहते हैं उसको, दो opposing parties के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ जो कि मतलब वो स्टेट जिसके तरफ होगा that party will win, that's called a swing state. और मुझे भी याद आ रहा है जब यूएस इलेक्शंस हो रहे थे कुछ टाइम पहले, तो आई ऑल्सो रेड अबाउट दिस स्विंग स्टेट. स्विंग स्टेट में ये होता है कि यूएस में कुछ स्टेट्स का तो पक्का है कि ये स्टेट्स तो पक्का ये जो कोई एक पार्टी जीतेगी, डेमोक्रेटिक पार्टी, और कुछ स्टेट्स का पक्का है कि यहाँ से रिपब्लिक पार्टी जीतेगी. बट देयर आर फ्यू स्विंग स्टेट्स, वहां से जीतना मेन है कि वहां से जो पार्टी जीतेगी दैट विल इवेंचुअली विन. So that's a swing state. So they are saying that India has become a swing state in these क्योंकि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर एंड देन अमेरिका के भी मिनिस्टर्स, सेनेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया को वू करने के लिए कि आप मतलब कि आप हमारे साइड आ जाओ, हमारी साइड आ जाओ. देन दिस इज अ गुड पॉजिटिव थिंग. Despite being in an adversarial relationship with India, China sees merit in reaching out to India to convince the latter to move on with business as usual, notwithstanding what it did to India in 2020. Okay. So despite being an adversarial मतलब like दुश्मन वाला relationship, our relationship are sour with China, but China still sees merit in reaching out to India to convince India to move on with business as usual, notwithstanding what it did to India in 2020. China sees the Ukraine war as an opportunity to construct an anti-American world order by forging some regional unity. This is at least partly explains Chinese Foreign Minister Wang Yi's recent visit to South Asia. Then came Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, the only recent visitor to have managed a personal meeting with the Indian Prime Minister. The meeting is also a clear indication of the Indian leadership's intent not to abandon Moscow, at least not yet. The US is also keen to retain India. सही बात है. Recently, Ukraine and Russia का war चल रहा है. Recently, like in मेरे ख्याल से in 2 weeks we can say, many diplomats came to India from different countries, so important countries, Russia, China, US, everybody is coming to and talking to Indian government. Obviously we don't know the actual inside talks what's happening, but
Something must be happening. That's why they all are coming. So the US is also keen to retain India in its fold. For sure, it doesn't want to lose the exceptional gains it has made with India over the past 2 decades. The visitor from the UK and Germany also want New Delhi on their side. New Delhi may indeed be on their side, but not in the manner they would like India to be. Exactly. एक चीज और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू दिल्ली मे इंडीड बी ऑन देयर साइड बट नॉट इन द मैनर दे वुड लाइक इंडिया टू बी. मतलब द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि if we are मतलब नॉट कंडेनिंग रशिया तो वी आर जस्ट अपोजिंग अमेरिका इन दिस और अपोजिंग जर्मनी और यूके ऑन दिस. नो, वी आर स्टिल विद देम आल्सो. बट द थिंग इज कि द थिंग्स आर वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स देन दीज थिंग्स. ये कोई बाइनरी चीज नहीं है कि 1 या 0, ऐसा नहीं है. By refusing to fully ally with either side and yet maintaining good relations with both, New Delhi may have finally experimented with the tenets of strategic autonomy that it has long professed but struggled to practice. Has finally experimented with the tenets, let me see the meaning of tenet, a principle of belief, especially one of the main principles of regional philosophy. Okay, the tenets of strategic autonomy that it has long professed but struggled to practice. Okay, the thing it is saying यहाँ पे कि by refusing हम लोग किसी भी इंडिया जो है किसी एक साइड के साथ फुली अलाइन नहीं कर रहा और दोनों ही साइड के साथ गुड रिलेशन बना के चल रहा है. तो इस वजह से नाउ न्यू दिल्ली हैज फाइनली एक्सपेरिमेंटेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि अब तक इंडिया कहता आया कि इट प्रोफेसेस बट it has struggled to practice. So now we are experimenting on that. Contemporary Indian diplomacy is a textbook example of a swing state that refuses to swing either way. Okay, so it is saying कि अभी जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है स्विंग स्टेट का दैट रिफ्यूजेस टू स्विंग ईदर वे. ओके, between the present and future. Yet there is a time to be a swing state and a time to think beyond it. There is between the present and future, yet there is a time to be a swing state and time to think beyond it. There is little doubt that the war will quicken the fundamental transformation that Asian geopolitics was already undergoing. Southern Asia's continental geopolitics is now China-centric. Obviously, it is only a matter of time before the rest of the Asian regions become China-centric as well. The US withdrawal from Afghanistan, its current focus on Russia and Ukraine, the further weakening of Russia, and Beijing's proactive outreach to the region with money and muscle will eventually lead to the end of Indian primacy in the region and the rise of a China-centric Asian geopolitical order. When the Ukraine war is done and dusted, India will be relegated to a weaker position in the region that it was before the war began. The current मैं हमेशा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है मुझे. Adrenaline rush in New Delhi of being a swing state, quoted by various powerful suitors, will eventually fade away. That is the harsh reality of geopolitics. That it is precisely why New Delhi should play its card extremely well right now to invest in future geopolitical dividends. Decision makers in New Delhi will have to go back to the drawing board and create long-term plans to engage the region, including China and the international community. ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अभी हम स्विंग स्टेट हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि आप स्विंग स्टेट होते हो और एक टाइम होता है कि आप उसके आगे का भी सोचो. तो अभी तो आप स्विंग स्टेट हो, सब कुछ है, लेकिन इट इज सेइंग कि आफ्टर दिस वॉर इज यूक्रेन रशिया वॉर इज ओवर, इंडिया will result in a weaker position than it is in now. ठीक है, और चाइना सेंट्रिक हो जाएगा पूरा एशिया एंड क्योंकि चाइना इज बीइंग मोर पावरफुल बाय द डे एंड इंडिया की रेलेवेंस खत्म होती चल जाएगी. और इसीलिए हमें अभी अपने कार्ड्स एक्सट्रीमली वेल खेलने की जरूरत है कि हम इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक अपनी जगह बना पाएं. Put differently, New Delhi will need to keep in mind its long-term objectives even during the delicate balancing that it is doing today. हम जो delicate, सही बात है, जब आप इतनी delicate balancing कर रहे होते हो तो वहाँ पर 90% चांस होता है आपके बिखर जाने का. 10% चांस होता है अगर आप तगड़े डिसीजन मेकर्स हो तो 10% चांस होता है कि आप अपनी कंट्री को मूव थ्रू करा ले जाओगे इस स्टॉर्म से. तो इट इज सेइंग कि इंडिया को इस डेलिकेट बैलेंसिंग के दौरान अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखने की जरूरत है. आइडियली इन द लॉन्गर रन इंडिया वुड लाइक टू हैव बोथ द वेस्ट एंड रशिया ऑन इट्स साइड, बट गिवन हाउ दिस वॉर इज अनफोल्डिंग एंड द मैनर इन विच बीजिंग इज मेकिंग इट्स मूव्स, न्यू दिल्ली मे इंडीड फाइंड इट हार्डर देन एवर टू मैनेज द ग्रोइंग कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया. Geopolitical choices are almost never black and white, exactly, nor are they always readily available. Yes, this is important line, I should highlight this. Very important line कि geopolitical choices are almost never black and white. These choices are never black and white, never binary, nor are they always readily available. ये हमेशा available भी नहीं होता. हो सकता है इस समय इंडिया जिस जगह खड़ा है उसके पास जिस तरह की चीजें करने की पावर अभी है और जितने लायबल दूसरे लोग हैं उतने आगे जाके ना हो.
Sometimes, therefore, states must proactively try to shape the environment to generate new options. It's New Delhi's turn to do so. So, Happyman Jacob, जिन्होंने ये लिखा, is a associate professor, Center for International Politics, Organization and Disarmament, School of International Studies, JNU, New Delhi. So, this was the first article, first editorial of the day, just telling how India is playing this strategic autonomy game and how India should extremely well, play their cards right. This is going good. I'm live. Good. So now let's see the second one. Okay, let's talk about what's happening in Ukraine. Yes, a Ukraine peace plan is possible. Okay, he's telling a Ukraine peace plan is possible. Let's see how. Even if it does not fully meet the requirements of either Moscow or Kiev, it would at least prevent a wider conflagration. Conflagration meaning an extensive fire which destroys a great deal of land or प्रॉपर्टी, प्रिवेंट अ वाइडर कॉन्फ़िगरेशन. मतलब इट इज सेइंग कि ये जो प्लान इन्होंने प्रेजेंट किया है, इस प्लान से इधर वो मॉस्को या कीव का सीधा सीधा रिक्वायरमेंट जो है पूरे तो ना होंगे, ना ही हो, बट ये वाइडर कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब इतना तबाही, ये रुक जाएगी. लेट्स सी. Several weeks into the Russia-Ukraine conflict, which has become a virtual proxy war with the United States and the NATO providing military assistance to Ukraine to persist in its fight against Russia, the fog of war has not lifted. Some direct talks between Russian and Ukrainian representatives have taken place, but these have been of little avail. At this point, it seems unlikely that an end to the ongoing humanitarian disaster is in sight. Okay. Boost for the US, it is increasingly evident that this is a war that nobody wants, least of all the Ukrainians or even the Russians. Yet no one seems to be making the right moves to end the conflict. For NATO and its allies in Europe, this is not a conflict they wish to wage at this time. For the US, however, the unity displayed by NATO currently has been a major boost, reinforcing its belief that European security is inextricably linked to a strong and united NATO. Whether with the help of NATO, the US has succeeded in isolating Russia and Europe is still an open question, but the US can feel satisfied with the outcome as of now. In the meantime, the carnage in Ukraine continues. Ukraine's President Volodymyr Zelensky, for his part, might claim that he is ready to discuss neutrality, even as Russia, while continuing with its military operations, has been sending out feelers that it could consider limiting the conflict. However, in effect, the two antagonists appear to be talking past rather than to one another. This is true, यहाँ मुझे एक बात याद आई कि जब ये बातें चल रही थी कि मतलब वॉर कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा, जब ये बातें चल रही थी फरवरी में, तो उस समय क्या था, फरवरी में या मार्च में, फरवरी में, राइट, हाँ फरवरी में. सो जस्ट इमेजिन यार, पूरा मार्च चला गया इस वॉर को. तो जब ये बातें चल रही थी कि अब बस कल या परसों में वॉर होने वाली है, ये तो उस समय इतना नहीं लग रहा था. उस समय लग रहा था एक हफ्ते की बात होगी, 10 दिन की बात होगी, लेकिन इतना लंबा खींचेगा, ये चीजें कुछ लोग कह रहे थे. एवरीबॉडी वाज सेइंग कि रशिया शुड अंडरस्टैंड कि इट विल नॉट बी दैट इजी कि यू विल जस्ट एंटर अ कंट्री एंड जस्ट इन्वेड इट एंड जस्ट गो आउट. ऐसा नहीं होगा. वॉर बहुत लंबी खिंच जाएगी, इतना शायद आप सस्टेन ही ना कर पाओ. ठीक है, तो ये चीज बस मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि एक बार जैसे अभी देखो ना, वॉर शुरू हो गई, अब दोनों प्रेसिडेंट कह रहे हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट दोनों ही कह रहे हैं कि हम बात करने के तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, ये वगैरह वगैरह. लेकिन वॉर तो जारी है और उसमें हो क्या रहा है, मे बी जेलेंस्की का कुछ ना बिगड़े, मे बी प्रेसिडेंट जेलेंस्की कुछ ना बिगड़े, प्रेसिडेंट पुतिन का कुछ ना बिगड़े, बट आप जनता के बारे में सोचिए ना, जो यूक्रेन की जनता है, जिनके घर पे बम फटा और घर उड़ गया, जो घर उसने पता नहीं कितनी मुश्किल से बनाया होगा, कब से वहां रह रहा होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो एक बम से उड़ गया. उसके कोई पैसे देने तो आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई बैंक उसको पैसे दे देगा, सरकार सब कुछ ठीक होने के बाद सबको पैसे दे देगी कि लो भाई अपना घर वापस बना लो, ऐसा तो होगा नहीं. सो ये और उन लोगों का मुझे नहीं लगता कोई खास लेना देना है इस लड़ाई से. बट स्टिल, एंड मेरे को पता चला कि रशिया और यूक्रेन में इतने एंशिएंट, क्योंकि ऑब्वियसली पहले कंट्री सेम थी ना दोनों, तो दोनों बट करके डिफरेंट हुई थी, तो कई सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी, जो कि दोनों कंट्रीज में रहती हैं, मतलब फैमिली का एक्सटेंडेड पार्ट वहाँ रशिया में रहता है और कुछ फैमिली यहाँ रहती है, रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब दोनों साइड. तो आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा वहां पर जनता में इतना आक्रोश होगा एक दूसरे को लेकर, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट रिलेटिव्स. तो मतलब वो बात तो है यार, इस वॉर से आखिरकार जनता का तो नुकसान होता ही है, सिर्फ जनता का ही नुकसान होता है.
what is more unfortunate is that the world is standing by, allowing the conflict to continue, with the West encouraging rather than restraining Mr. Zelensky from baiting Russian President Vladimir Putin. Yeah, this is a nice, you know, nice outlook. कि वर्ल्ड इज स्टैंडिंग बाय, ये तो है, वर्ल्ड स्टैंड्स बाय, वर्ल्ड ऑलवेज स्टैंड। मेरे को तो अभी बिलीव हो गया पिछले कुछ एक दो सालों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, अफगानिस्तान में जो हुआ, फिर बगल में हमारे म्यांमार में जो हुआ, श्रीलंका में जो हो रहा है, ठीक है, और उसके यूक्रेन में जो हो रहा है, मुझे अब एक तरह से ना बिलीव हो रहा है धीरे धीरे कि वर्ल्ड विल जस्ट स्टैंड बाय, द डे योर कंट्री विल बर्न वर्ल्ड विल स्टैंड बाय। सो डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी, रिलाई ऑन योरसेल्फ, आत्मनिर्भर बनो, वो वाली चीज। तो world stand up with the West encouraging rather than restraining Mr. Zelensky from baiting Russian President Vladimir Putin. Neither the United Nations nor any of the major countries have seriously explored any peace moves nor followed up on what Mr. Zelensky means when he says that he is ready to discuss neutrality. To an outsider, it looks as if Ukraine has become a pawn in the power game between the West and Russia. Seize the chance. If indeed the world is approaching a tipping point, then what is needed is less, not more, of the kind of grandstanding employed by Mr. Zelensky, occasionally laced with a demand for direct talks with Mr. Putin. Let me see, सब कुछ हो रहा है ना ठीक से? Yes. So, or the charade of negotiation that are currently taking place between Ukraine and Russian negotiators, it may be too much to expect the Russia side to demonstrate proper contriteness for the unfortunate killing of thousands of civilians. But pressure should be brought on Russia to try and enter into more realistic negotiations with Ukraine. The West also needs to play a more active role and try to devise a peace plan, taking advantage of the occasional statements made by both sides about their willingness to halt the conflict. True, man. This is true. Nobody is trying to, churn out a peace plan. This is true. Neither UN nor any major country. Let me just once search how many people have still died in the this war. Seems like many people is. Oh my God! United Nation is saying 13,000. This is सही पढ़ रहा हूँ ना मैं, कोई पुरानी चीज तो नहीं पढ़ रहा ना? No. Before turned into invasion. Okay, नहीं, ये तो डॉनबास रीजन में इन्वेजन से पहले जो है, this is turned into Russian invasion of Ukraine. इसमें shit. Sorry, yes. इसमें civilians अब तक Ukrainian government is saying 6,000 to 7,000 killed. United Nation is saying 1,417 killed and 2,000 wounded. Oh my God, this is civilians. And forces में 2 से 4,000. US estimate is 2,000 to 4,000. Ukrainian government 1,300 से 3,800, and Russian government is saying 1,351. And Russian forces 7,000 to 15,000. This is NATO is saying. Oh my God, they are saying Russian forces ज़्यादा kill हुए हैं. Literally, US estimate is 10,000 plus Russian forces are killed. Oh God. Just imagine, man. Just imagine. Mariupol 5,000 killed in just 24 February 28 March in 1 month. Source Ukrainian government. I don't know हम कितना रिलाई कर सकते हैं इन सोर्सेज पर, बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि कुछ तो इसमें से ट्रू होगा ही। और अगर इस 5,000 10,000 और इतने नंबर में कुछ भी ट्रू है, मुझे लग रहा है सब अगर मिला लें, मतलब रशियन फोर्सेज, यूक्रेन फोर्स में सबको मिला, मैं ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, तो एंटोनेस्क PR फोर्सेज सबको अगर मिला लिया जाए तो आई गेस कि ये इजीली 10,000 एंड यहाँ पर दिस इज सेइंग अराउंड एवरेज 10,000, दिस सेइंग अराउंड एवरेज 3,000 वी कैन से, दिस इज सेइंग on an average 3,000 you can take. It's around 15,000. Oh my God, 15,000 people have died on an average. 15,000 people just in 1 month. Oh God, I don't think coronavirus killed this many people in 1 month in Ukraine or Russia. Huge.
The crying need today is for a peace plan, which even if it does not fully satisfy the requirements of either Russia or Ukraine, and obliquely that of the US and West, will at least ensure a cessation of hostilities and prevent the conflict from becoming further enlarged, resulting in a wider conflagration involving more countries and more powers. It should not prove too difficult or beyond the realm of possibility to arrive at a peace arrangement or devise a plan that would accommodate Ukraine's professed need for neutrality and Russia's concern about the further eastward push of NATO. Working out an arrangement down to the smallest detail would, however, entail a great deal of subtle diplomacy by interlocutors acceptable to both Russia and Ukraine, who also have the necessary gravitas to undertake such a task. Speed is of the essence, as with each passing day, the risk of a wider conflagration increases. World is not bereft of individuals who can play a critical role as interlocutors at this time, but it demands both honesty of purpose and the will to overcome the odds. मुझे नहीं लग रहा वैसे इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है अभी. Let's just read India's stand. It is just saying and crying for a peace plan, which is obviously needed, but I don't think there's much value in this article. Next, even as China-Russia relations become further strengthened, the question before India would be how it should position itself. Till now, India had taken a consistent stand of not criticizing or condemning Russia on any account, including its invasion of Ukraine. This was largely based on India's long-term defense and other relationships with Russia. This could undergo changes. One might also anticipate a further churn in the politics of West Asia, where the Abraham Accords in 2020 seemed to bring a certain degree of normalcy and stability. Iran's posture and politics will also play an important role in shaping the politics of this region. One thought that cannot be dismissed as being entirely frivolous is whether repeated accusations leveled by the West against Mr. Putin of attempting to use nuclear weapons to devastate Ukraine are a prelude to or a curtain raiser for experimentation. More importantly, preparing the public to consider removing the current taboo regarding nuclear weapons. Repeated references without providing any evidence would seem to suggest that this might possibly be a smokescreen for such experimentation. For instance, it may not be too outlandish for both sides to consider use of miniaturized nukes with precision delivery mechanism. If the Russia-Ukraine war were to persist, one could even envisage the possibility of the use of micro-nuclear payloads mated to miniaturized precision delivery mechanisms. One hopes that before this, saner voices across the world would prepare the way for a peace package in Ukraine. Okay, so they are saying if the time ho gaya, so maybe both the countries try miniature nukes on each other through drones ताकि precision हो जहाँ पे भी they attack. And he is also saying कि let's hope कि इससे पहले saner voices जो भी sane लोग हैं across the world, क्योंकि अभी तो literally it's insanity. There are so many organizations built for this specific purpose to prevent a war, and all are silent. I don't understand what's the use. So the writer M.K. Narayan is a former director of Intelligence Bureau. हमारे IB के former director है M.K. Narayan, a former national security advisor. Okay, ये हमारे former national NSA भी थे, national security advisor भी थे, and a former governor of West Bengal. Okay, so this was his opinion. Now just let me see once. Okay, it's going good. A far-reaching verdict that ends a regressive exception. Okay, in pronouncing the end of the marital rape exception, the Karnataka High Court has delivered a nuanced judgment. Okay, let's see what Karnataka High Court has done. This is, मैं एक चीज थोड़ा सा बता दूं ये marital rape के बारे में कि this is very sad to know कि हमारे constitution में marital rape is not considered a crime. Okay, it's not considered rape. This is the this is a sad thing. I guess it should be changed. So, but I agree. I'm not like the he's saying without understanding the consequences. ऐसा नहीं है. I understand कि marital rape को prove करना बहुत hard है. मतलब hard क्या? It's the hardest thing. It's very complex. How would you prove a marital rape? Because there's no just think about it. It's hard to prove. Now let's just read. Over the last several months, arguments challenging the constitutionality of the marital rape exception in Section 375 of IPC. IPC के Section 375 में ही ये चीज़ है कि marital rape को एक exception माना गया है, उसको rape नहीं माना जाता.
तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया जा रहा है काफी बार, ओवर लास्ट सेवरल मंथ्स चैलेंज किया गया है. Had gripped the Delhi High Court. While the judgment in those petitions is still awaited, in one clean swoop Justice M. Naga Prasanna of the Karnataka High Court on March 23, 2022, in the case of Rishikesh Sahu versus State of Karnataka, pronounced the end of the marital rape exception. Okay, so this Karnataka High Court just in a clean swoop, pronounced the end of marital rape exception. Let's see what happened. The background. Outcomes in judicial proceedings are almost always shaped by the cases which come before the courts. This judgment was a result of a unique case where a woman had filed a criminal complaint of rape against her husband due to the repeated acts of sexual assault she had to face. The police registered her complaint under Section 376, notwithstanding the marital rape exception. A charge sheet was filed, and the Sessions judge took cognizance and framed charges under Section 376. The husband filed an application to drop the charge of Section 376, but the Sessions judge rejected it. This led to the husband approaching the High Court seeking to quash the criminal proceedings. Okay, so this was the case. क्या कहते हैं, a woman, she filed a complaint for Section 376 में she complained. Let me just once check what is the Section 376 of IPC. Okay, this is just rape. Okay, not marital rape. Section 376 is rape, for rape. तो उसने rape के लिए file किया FIR, and the husband also filed an application to drop charge, लेकिन session court ने reject कर दिया. तो the husband moved High Court on this matter. In a nuanced and far-reaching judgment, Justice Naga Prasanna refused to quash the charge of rape against the husband. He held that if a man, being a husband, is exempted for his acts of sexual assault, it would destroy women's right to equality, which is the very soul of the Constitution. सही बात है. जस्टिस नागा प्रसन्ना, कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस ने साफ कहा कि अगर किसी हस्बैंड पर, किसी आदमी पर सिर्फ इस वजह से कि वो एक हस्बैंड है इसलिए उसके ऊपर रेप के चार्जेस ना लगे, तो दिस हर्ट्स द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, which is women's right to equality. Okay. He held that the Constitution recognizes and grants equal status to women, but the exception to marital rape in the IPC amounts to discrimination because a wife is treated as subordinate to the husband. Yes. The Constitution considers marriage as an association of equals and does not in any sense depict women to be subordinate to men, and guarantees women the fundamental rights under Article 14, 15, 19 and 21, the right to live with dignity, personal liberty, bodily integrity, sexual autonomy, right to reproductive choices, right to privacy, right to freedom of speech and expression, everything. He held that the exemption of the husband on committal of such assault or rape cannot be so absolute that it becomes a license for commission of a crime. Exactly. ये बात है ना कि मतलब अगर आप हस्बैंड को एक्सेप्ट कर रहे हो इस रेप, मैरिटल रेप के उससे क्राइम से, ऑन कमिटल ऑफ सच असॉल्ट कैन नॉट बी सो एब्सोल्यूट दैट इट बिकम्स अ लाइसेंस फॉर कमीशन ऑफ क्राइम. ठीक है. इन प्रोवोकेटिव वर्ड्स ही स्टेटेड, अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट, रेप इज अ रेप, be it performed by a man, the husband on the woman, wife, and refused to quash the case. He just said a man is a man, an act is an act, और रेप इज रेप. बात खत्म. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैन एक हस्बैंड है, वो विमेन एक वाइफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अर्लियर जजमेंट्स दे हैव बीन, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग फाइनल. अभी ये बहुत सारे दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस फंसा हुआ है, एंड बहुत सारे अदर हाई कोर्ट में भी है, और इन सभी का अब सुप्रीम कोर्ट विल गिव द फाइनल फैसला इस पर. तो लेट्स सी, वो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आगे जाके, लेकिन ऑब्वियसली इसको बहुत टेढ़ी खीर है ये. देयर हैव बीन, बट सीरियसली आई रियली फील बैड फॉर ऑल द सर्वाइवर्स आउट देयर. Earlier judgments, there have been other judgments which have already been a precursor to doing away with this exception. There have been other judgments which have already been a precursor doing away with this exception. In Independent Thought versus Union of India 2017, the Supreme Court of India diluted it and removed the exception to marital rape to a wife not below 15 years and made it 18 years. The court stated that this would not amount to removing the exception to marital rape for women above 18 years, as that was not the case before it. But Justice Madan B. Lokur, in similar words, held a rape is a rape. A rape that actually occurs cannot legislatively be simply wished away or legislatively denied as non-existent.
The court held that a girl cannot be treated as a commodity, having no say over her body, or someone who has no right to deny sexual intercourse to her husband, and that the human rights of a girl child are very much alive and kicking, whether she is married or not. ये important चीज है. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा. इस पूरे इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें. इस हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि 18 साल से नीचे की अगर वाइफ है, और इफ शी इज फाइलिंग चार्ज फॉर ये मैरिटल रेप, तो उसको लेजिट माना जाएगा, उस पर केस होगा. 18 से ऊपर पर अभी नहीं होगा. ये है. सो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर अगर मैरिटल रेप को आप एक्सेप्शन मानते हो, देन यू आर ट्रीटिंग अ वुमेन एज अ कमोडिटी, हैविंग नो से ऑन हर ओवर हर बॉडी. उसको उसकी बॉडी पे कोई से नहीं है, और समवन हु हैज नो राइट टू डिनाई सेक्सुअल इंटरकोर्स टू हर हस्बैंड. सो दिस it is like animal like treatment, right? So roots of the principle: the exception of to marital rape in common law was due to the dictum by Chief Justice Matthew Hale of Britain in 1736, where he stated. आप समझ रहे हो, 1736 में कोई इंसान था, मतलब कोई क्या, एक चीफ जस्टिस थे, मैथ्यू हेल ऑफ ब्रिटेन. 1736 की सोच हम 2022 में चला रहे हैं. insane. So this Chief Justice Matthew Hale of Britain in 1736, he stated, but the husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent in contract the wife hath given up herself in this kind unto her husband, which she cannot retract. आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है वो? Let me just highlight this. Matthew Hale of Britain ने 1736 में कहा था कि when a wife is married to a husband, तो उस मैट्रिमोनियल उस म्यूचुअल मैट्रिमोनियल में she is giving up her right on her body. ठीक है? That is what he is saying here. The concept that by marriage a woman gave up her body to the husband was accepted as an enduring principle of common law, due to which a husband could not be guilty of raping his wife. ठीक है? और if because just by marrying a person she is giving up her right on her body, तो इस वजह से a husband is cannot be guilty of raping his wife. This was therefore translated into criminal codes, including the Indian Penal Code, which India adopted. ठीक है? मतलब ब्रिटेन में 1736 में ये जो है उनके पीनल कोड में गया, और इंडियन पीनल कोड भी बना. ब्रिटिशर्स नहीं बनाया हमारे लिए भी, और आज़ादी के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने समय हमने मोस्ट ऑफ द पीनल कोड को जस्ट अडॉप्ट कर लिया था. सो दैट्स व्हाई इट केम इनटू आवर पीनल कोड आल्सो. दिस प्रिंसिपल हैज नाउ बीन कंप्लीटली अबॉलिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम in 1991. The exception, oh my god. So these things now, I just feel like why do we do these things? I don't understand. So Britain made this thing, and in 1991, however very late, but still in 1991 United Kingdom ended this. United Kingdom was done away with this. Okay, उन्होंने खुद के उसको खत्म कर दिया, but हम लोग जिन्होंने उनसे ही आगे अडॉप्ट किया था, हम लोग उसको आज 2022 में भी चलाए हुए हैं. So this is completely abolished. In the case of R versus R, the House of Lords held that where the common law rule, ये House of Lords वहाँ का लोकसभा है, held that where the common law rule no longer even remotely represents what is the true position of a wife in present day society, the duty of the court is to take steps to alter the rule. ये important है. I guess ये ना यहीं से important है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो उनकी लोकसभा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि ये जो कॉमन लॉ रूल जो पहले था, वो आज के प्रेजेंट डे सोसाइटी में जो वाइफ की ट्रू पोजीशन है उसको कहीं से भी कहीं तक रिप्रेजेंट नहीं करता. उस समय वाइफ की पोजीशन क्या कहते हैं, सोसाइटी वही मानती थी, तो उस हिसाब से लॉ था. बट आज वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं. वाइफ इज इक्वल टू द हस्बैंड. every human being is equal to another human being, irrespective of their money in their bank and their gender and their color, their religion. So the court took steps to alter the rule. The court held that a husband's immunity, as expounded by Chief Justice Matthew Hale, no longer exists, and took the view that the time had arrived when the law should declare that a rapist remains a rapist, subject to the criminal law, irrespective of his relationship with his victim. Exactly. And I have so many points on this. A victim
मतलब रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट। मेरे को ना ये पूरा का पूरा नहीं करना चाहिए वरना मैं खुद ही भूल जाऊंगा। ये लाइन है, अ रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट सब्जेक्ट टू द क्रिमिनल लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम। इसका विक्टिम से कुछ भी रिलेशनशिप हो, उससे इररिस्पेक्ट में उसने रेप किया है तो ही इज अ रेपिस्ट, बात खत्म। It held that it was a duty of the court to remove a common law fiction which had become anachronistic and offensive, and that there was no justification for the marital exemption in rape. That was in 1991, more than 30 years ago in the UK. The Karnataka High Court took a similar view of its duties as a constitutional court in the present case and held that the exception to marital rape in Section 375 is regressive, wherein a woman is treated as a subordinate to the husband and against the constitutional guarantee of equality. Our courts have not truly pronounced the death knell of the marital rape exception. एंड आई जस्ट विश कि ये चीज, दिस इज बिग, कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन बिग है। ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चलेगा तो उसमें काफी ज्यादा सपोर्ट प्रेजेंट करेगा। एंड जैना कोठारी जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, शी इज अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस विल रियली हेल्प अ लॉट ऑफ विक्टिम्स आउट देयर। एंड मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को वही करना चाहिए जो यूके 1991 में कर चुका है। दिस वाज अबाउट मैरिटल रेप। नाउ लेट्स सी, एक तो मैरिटल रेप, एक चीज मैं और यहाँ पर बताना चाहूंगा, लेट मी जस्ट एक बार चेक कर लूं मैं लाइव ना। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा कि एक प्रॉब्लम एक और लॉ में है, एडॉप्शन लॉ में। इंडिया का जो एडॉप्शन लॉ है वो क्या कहता है, उसमें कुछ कुछ तो इस तरह की चीजें हैं कि अ सिंगल मैन कैन नॉट कैन नॉट अडॉप्ट अ डॉटर। तो वो सब चीजें तो मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड एवरीथिंग, बट देयर इज ऑल्सो थिंग कि LGBTQ community cannot adopt any child, cannot adopt. Okay, now they are not realizing कि LGBTQ community are the major stakeholders in this law. ठीक है, क्योंकि LGBTQ community ही वो community है जो कि adopt कर सकती है, मतलब adoption is the only option for them. So major adoption वही होगा and they cannot adopt, and this is just completely wrong, I think. इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में बहस चलनी चाहिए एंड एवरीबॉडी शुड जस्ट थिंक अबाउट इट. देयर शुड बी अ डिबेट ओवर दिस. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, but there should be a debate over this because in US this happens. LGBTQ community can adopt around the world wherever LGBTQ community are considered citizens. Yes, I'm back. Sorry. Problem हो गई थी. I don't know what. Still live, right? Yes. So I was talking about adoption thing. So there should be a debate over this. Just let me know what you think, okay? Now, making groundwater visible. ये एक यही है ना? Yes. This is actually the theme of World's Water Day 2022. Yeah, making groundwater visible. The existing approach of dealing with surface water and groundwater independently has severe limitations. The theme of this year's World Water Day, March 2022, was groundwater making the invisible visible. The theme, this is the theme. ठीक है, मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे था, उसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. इनविजिबल क्यों बोला है? बिकॉज ग्राउंड वाटर इज इनविजिबल. इट्स
inside ground obviously, लेकिन it's the most important thing if you think about it. Okay, so the primary focus is to draw attention to the role of groundwater in water and sanitation system, agriculture, industry, ecosystem, and climate change adaptation. Groundwater helps reduce the risk of temporary water shortage and caters to the needs of arid and semi-arid regions, but its value has not been fully recognized in policy making. Okay. While dependence on groundwater is increasing everywhere, there are serious issues of depletion of stored groundwater and deterioration of quality. High temperatures and drought threaten water security. Due to its high storage capacity, groundwater is more resilient to the effects of climate change than surface water. Okay, ये मुझे नहीं पता था कि groundwater is more resilient. मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे सबसे पहले आपके सरफेस वाटर खत्म होंगे और उसके क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी से होगा, अगले 20 साल बाद और तेजी से होगा, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल द कॉन्फ्रेंसेस अराउंड द वर्ल्ड बट स्टिल नोबडी इज डूइंग एनीथिंग ऐसा जिससे कि हम प्रिवेंट कर पाएंगे क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, ऐसा होने नहीं वाला है, ठीक है. नोबडी इज डूइंग सच थिंग. जस्ट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, कार्बन एमिशन इंक्रीजिंग, everybody is using many ACs, fridge and what not, and just too much. अगर हर बंदा खुद भी एक कार्बन न्यूट्रल होने का सोचेगा कि मैं एक इंसान कार्बन न्यूट्रल, माई होम इज कार्बन न्यूट्रल, जितना कार्बन आई एम प्रोड्यूसिंग उतना ही आई एम एंडिंग ऑल्सो, ट्रीज आई एम ग्रोइंग, so it would just in 5 year climate change will reverse actually, लेकिन nobody is doing that. So just know कि आपका surface water पहले खत्म होगा फिर ground water खत्म होगा. The International Conference on Groundwater, key to the Sustainable Development Goals, and the UN Water Summit on Groundwater December 2022 are part of global initiatives to highlight the significance of groundwater in sustainable development. With an annual groundwater extraction of 248.69 billion cubic meters, India is among the largest users of groundwater in the world. Oh, just imagine this number. Can you imagine this number? Annual groundwater extraction of 248, मतलब मेरे ये वर्ल्ड की बात हो रही होगी, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, अर्थ particularly 248.69 billion cubic meters 2017 में we extracted. Oh my god, almost 89% of the groundwater extracted is used for irrigation and the rest for domestic and industrial use. 9%, 2%, 80, हम लोग 89% इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. आपने देखा होगा गांव वगैरह में एक बोरिंग चलती है, वो ग्राउंड वाटर से ही होती है, समरसीबल टाइप होता है वो भी, है उसमें बहुत सारा पानी फोर्स से निकलता है, उससे इरिगेशन होती है, मेजरली उसी से होती है. मैंने सच में और कोई तरीका नहीं देखा है इरिगेशन का. Extraction value. According to the Central Groundwater Board, the annual groundwater withdrawal is considered to be safe when the extraction rate is limited to below 70% of the annual replenishable recharge. Available data indicate that the level of extraction for the country in 2017 was 63% from 58% 2004. However, the level varied across regions. Punjab, Rajasthan, Haryana, Delhi, Chandigarh, Himachal Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry have crossed the 70% mark. Okay. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अकॉर्डिंग एनुअल ग्राउंड वाटर विड्रॉल जो है वो सेफ समझा जाता है जबकि एक्सट्रैक्शन रेट इज लिमिटेड टू बिलो 70% ऑफ द एनुअल रिप्लेनिशेबल रिचार्ज. ओके, एनुअल रिप्लेनिशन रिचार्ज का क्या मतलब है कि जितना वापस से रिचार्ज हो जाएगा उसका अगर आप 70% रेनफॉल से, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर रेनफॉल से ही रिचार्ज होता है. ग्राउंड वाटर के बारे में सबसे तगड़ी चीज क्या थी, नेचर ने ना हमको सारी चीजें बना कर दी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग ओवर यूज करने लगते हैं, इतना ओवर यूज कर देते हैं कि मतलब वो चीज फिर बचती नहीं है, खत्म हो जाती है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्राउंड वाटर है. नेचर ने हमें ग्राउंड वाटर दिया कि भाई तुमको पानी का यूज है ऑब्वियसली, तो आपके ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर हर साल बारिश होगी उससे रिचार्ज हो जाएगा. और वो ग्राउंड वाटर इतना है कि आप सोच नहीं सकते, आप उसमें से यूज करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जितना रिचार्ज हो जाएगा उससे क्या कहते हैं 70% कम यूज करना. ठीक है, अगर 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 100 लीटर पानी है नीचे तो उसमें 70 लीटर आप यूज करना, 30 लीटर रहने देना, और अगले एक साल में बारिश हो के वापस से वो 100 लीटर हो जाएगा. लेकिन हम लोग फिर भी नहीं सुनते हैं. हम लोग क्या करेंगे, 100 लीटर है, कोशिश करेंगे उसमें से 150 लीटर निकाल ले. तो यार ऐसे थोड़ी होता है. सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हमारे इंडिया के, उसने कहा था कि भाई एक्सट्रैक्शन रेट जो है वो अगर आप 70% जो एनुअल रिप्लेनिशल रिचार्ज है उससे 70% के नीचे रखते हो
जितना आप निकालोगे उसको, तो इट्स सेफ, आप कर सकते हो वैसा। लेकिन हमारा जो एवरेज है कंट्री के लिए 2017 में, 2017 की बात हो रही है, वो 63% है, जो कि ठीक है, 70% से नीचे कहने को बोला था, ओके। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब, जहाँ खेती ज्यादा होती है, पंजाब, राजस्थान में खेती उतनी ज्यादा नहीं होती होगी, बट वहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है, तो वहाँ पे ज्यादा जरूरत है निकालने की। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दे हैव क्रॉस्ड 70% मार्क। ओके, इन लोगों ने कहा हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, हमें सेफ नहीं रहना, we live on the edge of 534 districts in 22 states। इवन मेरे को याद आ रहा है अभी कुछ, मेरे ख्याल से एक साल हो गया इस बात को, दिल्ली में बात चल रही थी कि ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है दिल्ली में, तो पता नहीं, मे बी ऐसा हो सकता है। 202 districts had stage of extraction ranging from 71% to 385%। Can you imagine this? The कैन यू इमेजिन व्हाट मतलब क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन चीज़ों के हेड हैं, कि जो इन चीज़ों के इंचार्ज हैं, कि हमारे देश में 534 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 534 डिस्ट्रिक्ट, 534 डिस्ट्रिक्ट में से 202 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो 71% से 385% तक है। समझ रहे हो आप? टू मच, ओ माय गॉड। नीति आयोग has set the 70% extraction value as the target to be achieved by 2030। नीति आयोग कह रहा है कि 2030 तक हम इन सब चीजों को कम कम करके 70% पे ले आएंगे। Besides the high level of extraction, quality is also an issue of concern। A quantity-wise safe district may be vulnerable due to deterioration of water quality। Fluoride, iron, salinity, nitrate and arsenic contamination are major problems। Okay, ये major problems है ground water में। Fluoride, iron, salinity, nitrate and arsenic contamination। As many as 335 districts reported nitrate pollution कंपेयर टू 109 इन 2006। 109 में और 2006 में 109 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनमें नाइट्रेट पोल्यूशन था, इस समय 335 ऐसे हुए हैं। और नाइट्रेट की मात्रा पानी में बढ़ने से एक बीमारी होती है, क्या नाम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, आई गेस, या ब्लू बेबी सिंड्रोम। A high level of nitrate affects human health। Source of nitrates are mainly anthropogenic and depend on local action। Anthropogenic मेरे ख्याल से सिर्फ ले देना, chiefly environment pollution। ओके, हमारी, तो हम ही हैं हर चीज के ना, सोर्स हर प्रॉब्लम के ह्यूमंस हैं। ये जो नाइट्रेट होता है, जो पानी में बढ़ रहा है, नाइट्रेट पोल्यूशन हो रहा है, उसका सोर्स जो है नाइट्रेट का, मेनली एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी से का रिजल्ट है, एंड डिपेंड ऑन लोकल एक्शंस। मतलब जस्ट इमेजिन अगर ह्यूमन ये करना छोड़ दें तो हमारा नाइट्रेट पोल्यूशन नहीं होगा और एट लास्ट हम ही सेव होंगे। बट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का इससे बेटर तरीका क्या होगा? Biological contamination has also been reported from different parts of the country। Okay, so changing approach, the existing approach of dealing with surface water and groundwater independently has severe limitation। As the Mihir Shah Committee 2016 proposed, the Central Water Commission and the Central Groundwater Board could be united and a national water framework with an integrated perspective developed। There is also a need to work out local level plans covering water resources in all its forms: rainwater, surface water, soil water and groundwater, and the resource use sectors. Groundwater, surface water and the intervening landscape form part of a matrix, and together with the vegetation system they constitute the critical zone where most terrestrial life resides। Re-establishing connections between surface and groundwater systems, both for governance and management, entails a local area approach। सॉरी, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। तो
Re-establishing connection between surface and groundwater systems, both for governance and management, entails a local area approach that will involve revisiting the present groundwater estimation process, large-scale aquifer mapping, linking aquifers to the river basin, watershed boundaries, hydrogeomorphology analysis, and factoring land uses and human-induced changes in the water system. These are the things जो कि करने की जरूरत है. Linking cropping patterns and crop intensity with groundwater availability, aquifer type, and the present state of groundwater extraction at the farm level is imperative. At present, there is an energy subsidy for groundwater extraction with little regulation. This encourages farmers to withdraw water at their will. ये problem है कि अभी जो है ना, आपको पता है बिजली जो लगती है, वो जो मैंने आपको बताया ना, बोरिंग लगी होती है, वो ग्राउंड वाटर को निकाल के वो लोग खेतों में इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. तो उस पर जो एनर्जी बिजली मिलती है वो उसमें बहुत मैसिव फ्री मिलती है बिजली, मैसिव सब्सिडी मिलती है. उनको बहुत कम रुपए लगते हैं उस बिजली को यूज करने के लिए, जो कि आपके ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में काम आती है. तो उससे क्या होता है, फार्मर्स कैन यूज जितनी बिजली दे वांट एंड दे जस्ट विथड्रॉ वाटर एट देयर विल. अगर वो उस बिजली में पैसा लगेगा तो दे विल ऑल्सो थिंक यार थोड़ा कम चलाते हैं, है ना. जस्ट लाइक मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो एसी में होता है, आप एसी लगाते हो अपने घर में, लेकिन एसी के साथ क्या होता है, एसी से बिल तगड़ा आता है आपका, तो आप एसी को पूरे दिन नहीं चला सकते. लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कि सरकार ने कह दिया कि एसी की वजह से जो बिल आता है उसमें हम पैसा आपको कम लगेगा, एनर्जी सब्सिडी देंगे उसमें तगड़ी वाली, तो फिर आप क्या करोगे, पूरे दिन एसी चलाओगे. दैट्स द थिंग वहां पर है. There is a larger issue of ownership of community resources in this context. Although groundwater recharging takes place through a geohydrological process and is not confined. Yes. And is not confined to administrative or property boundaries. I guess someone was watching here, but he went away thinking I'm just wasting time maybe. So there is a larger issue of ownership of community resources in this context. Although groundwater recharging takes place, ये सही बात है, community ownership आप मानो ना resources का, लेकिन यार इसमें ना मैं समझता हूँ सिर्फ नॉर्मल सिटीजन्स की बात नहीं है, इसमें बहुत लोगों की बात है कि आप मतलब आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट और एवरीबडी इन्वॉल्व इन सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड, एक आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि हर एक सिटीजन को, हर एक इंडिविजुअल सिटीजन को एक ओनरशिप वाली फीलिंग आए, कम्युनिटी ओनरशिप वाली फीलिंग आए कि मतलब वी एज अ कम्युनिटी ओन आर ग्राउंड वाटर. सो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मैं सारा यूज कर जाऊं या मैं एकदम मजे से सारा पानी बहा रहा हूँ, रोड पे पानी डाल रहा हूँ. We should not do those things. Although groundwater recharging takes place through a geohydrological process and is not confined to administrative or property boundaries, a landowner has the exclusive right to groundwater available in their property. A community resource thus turns into a private resource due to the location of extraction site. Re-articulation of the legal framework for groundwater use gains relevance in this context. ये important बात उन्होंने करा है. ये कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है वो जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से होता है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, किसी इंसान का कोई लेना देना नहीं है, वो नेचर से हो रहा है, ठीक है. लेकिन स्टिल उसके, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी चीज के होता है, वो होगा नीचे से, है ना. लेकिन मतलब पानी ये देख के नहीं जाता कि इसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी है. पानी तो अपने जहां उसको जगह मिलेगा वहां से अंदर जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा. लेकिन जब उसको यूज करने की बारी आती है तो हम लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज करते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो मेरा है. कैसे तेरा है भाई, है ना, वो क्या पता कहाँ से आया, वो इंडियन ओशियन से उठ के पानी वेपोरेट हुआ, तुम्हारे यहाँ बारिश हुई, उससे तुम्हारे रिचार्ज हुआ, तुम्हारा पानी कैसे हो गया, है ना. सो इस यहाँ पर लॉ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा बदलना पड़ेगा कि पीपल अंडरस्टैंड कि द ग्राउंड वाटर अंडर देयर टेरिटरी इज नॉट देयर ग्राउंड वाटर टू यूज, इज नॉट देयर एट ऑल. उनको समझना पड़ेगा. The new paradigm for groundwater management is a socio-ecological challenge where localism matters. The new paradigm for groundwater management is a socio-ecological challenge where localism matters. Exactly, यहाँ localism matter करता है. आप ऐसा नहीं सरकार सिर्फ ऊपर बैठे बैठे आप ऐसा समझते हो कि देश कि सारे फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होता है. लोकलिज्म यहाँ मैटर करता है, आपकी भी जिम्मेदारी है. It warrants
टेक्निकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड गवर्नेंस रेमेडिएशन विद स्पेस फॉर एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें ना, और रोजमर्रा की ये चीजें हैं, ये रोज की चीज है, सरकार नहीं देख सकती ना आके, आपको खुद करना पड़ेगा। एंड कम्युनिटी रेगुलेटरी ऑप्शंस टू मेंटेन ग्राउंड वाटर बैलेंस एट द विलेज वाटरशेड लेवल। अब जिन्होंने लिखा है श्री कुमार चट्टोपाध्याय इज नेशनल फेलो ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड फॉर्मर साइंटिस्ट एट नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज। So this was good about groundwater, how important it is. Now let's see gods and comrades. This is particularly for Tamil Nadu, I guess, and the Hinduization of Tamil Nadu politics. The CPIM is seeking to enter the temple. Oh, CPIM is late in entering the temple arena. Everybody should enter the temple arena. That's where politics is happening right now in the country. But I'm not going to read all this because this is about state politics. I don't read state politics. I just read national issues of concern, topics of importance. For a full repeal, this is about AFSPA. Yes, this is important, I guess. So, AFSPA के रिपील के बारे में, AFSPA क्या है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर से वो दे दूं, मेरे ख्याल से इस आर्टिकल में तो होगा ही। AFSPA is Armed Forces Special Protection Act, I guess. Special Powers Act, sorry, Armed Forces Special Powers Act। और इसमें क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट जैसे असम, मेघालय, इन सब जगह पे नागालैंड, मेजर नागालैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स होती हैं। इतनी ज़्यादा स्पेशल पावर्स होते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे किल समबडी, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मे बी अगर वो कोई सिविलियन है तो भी, मतलब इट्स रियली पॉसिबल कि सम आर्मी पर्सन जस्ट शूट्स अ सिविलियन एंड उसको उसके क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ेंगे। सो दिस इज इन अ लेमैन लैंग्वेज, दिस इज व्हाट AFSPA इज। बनाया क्यों गया था? बनाया इसलिए गया था क्योंकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में पहले बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी। ओके, उस इंसर्जेंसी के कारण टेरिटरिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट वाले जो कारण होते हैं वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई जिहादी वाली बात नहीं है। उनके अपने रीजन है, उनके अपने रीजन है। ओके, यू विल स्टडी देम तो यू विल अंडरस्टैंड। उनके इस टाइप के रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट हैज बीन नेग्लेक्टेड, so they want independence in so many things। and कहीं कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गलती है। कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है? मेरे ख्याल से ये मिजोरम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मिजोरम में once there was a pandemic that happened। okay, pandemic या endemic क्या बोलेंगे, I don't understand। उसमें क्या हुआ था, मेरे ख्याल से शायद रैट्स का हुआ था वो, कि रोडेंट, इट वाज अ रोडेंट इन्वेजन एक तरह से पूरे मिजोरम में। चूहे फैल गए थे, इतने चूहे हो गए थे कि दे वर ईटिंग एवरीथिंग, सारी फसल खा गए, और क्राइसिस हो गया था, मतलब फूड इनसिक्योरिटी बहुत ग्रू हो गई थी सब कुछ। और उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट जस्ट ब्लाइंड टुवर्ड्स देम, दे डिडंट डू एनीथिंग। और उस समय दे फेल्ट लाइक कि मतलब दे डिड नॉट हेल्प अस इन आवर बैड टाइम, सो वी शुड जस्ट चूज आवर ओन गवर्नमेंट, और इस तरह की चीजें हुई थी। तो दिस वाज, और इन सब चीजों से वहां पे इंसर्जेंसी ग्रू हुई और उस गवर्नमेंट ने AFSPA लगाया। नाउ लेट्स रीड व्हाट दे आर सेइंग। अभी बात चल रही है AFSPA के रिपील के लिए, तो फॉर अ फुल रिपील बात चल रही है, बिकॉज इन रिसेंट ईयर्स कहीं कहीं जगहों से AFSPA को हटाया गया है, जहाँ जैसे आसाम के पहले पूरा आसाम में था, फिर आसाम में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहने दिया, इस तरह से। तो आप पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। The relaxation of AFSPA is welcome, but the demand for full repeal should be considered in what is clearly a nod to the vociferous demand for the repeal। vociferous का क्या मतलब है? Vehement or clamorous, especially of a person or speech, and it is not helping। अपनी भावनाओं या विचारों को जोरदार और गंभीर ढंग से व्यक्त करते हुए, expressing your opinions or feelings in a loud and confident way। Okay, so vociferous demand for the repeal of the unpopular Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) from several states in the northeast, especially after 13 civilians were killed in the Mon district, Nagaland, in December last year. The Union Home Ministry had decided to considerably reduce the number of disturbed areas under the act in 3 states। The order from April 1, ये आपको याद ही होगा ना, नागालैंड में 13 civilians were killed। 13 civilians को आर्मी ने कुछ और समझ के उनको ये समझा कि ये शायद टेररिस्ट हैं और इंसर्जेंट्स हैं, और ये समझ करके उनको मार दिया। बाद में पता चला दे वर इनोसेंट सिविलियंस, दैट हैपेंड। तो द ऑर्डर फ्रॉम अप्रैल, एंड ये इतना सिंपली नहीं हुआ था, ये कुछ इस तरह से हुआ था, मुझे याद है।
क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज आई थी कि अमित शाह वाज रीडिंग इट फ्रॉम अ पेपर, उस पेपर में सारी बातें लिखी हुई थी और अमित शाह पेपर लेकर आए थे, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे थे बिकॉज इट वाज वेरी सेंसिटिव इशू। तो उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि देयर वाज सम जीप और उस जीप में कुछ लोग थे, सिविलियंस थे, आर्मी को लगा कि वो टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट्स हैं और उन्होंने गोली चलाई और उसमें वहां पे शायद किसी एक बंदे की मौत हुई या शायद सबकी मौत हुई, मुझे पूरी टेक्निकलिटी नहीं याद। ये हो गया इस चीज को 3-4 महीने हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर द पीपल विलेजर्स दे गैदर्ड अराउंड द पुलिस स्टेशन टू मतलब टारगेट पुलिस, ओके, वॉलेंटली टारगेट पुलिस। तो पुलिस ने अपने बचाव में फिर से मतलब ये आर्मी ने अपने बचाव में फिर से कुछ गोलियां चलाई, उसमें फिर से कुछ लोग मारे गए। तो इस तरह करते करते 13 लोग मारे गए थे उसमें। तो एंड वो जिन्होंने मारा है मतलब जो आर्मी मेंबर्स हैं, इसमें ऑब्वियसली मैं आर्मी की गलती नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उनकी उन्होंने खुद ही माना है कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन उनकी पूरी पूरी गलती नहीं है। व्हेन यू लिव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो जो भी है वो वहाँ के लोग ही ज्यादा समझेंगे, मैं नहीं समझूंगा यहाँ दिल्ली में बैठ के ये सब चीजें। बट द थिंग इज कि ये मतलब आसपास से नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो और इसके हटाने से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट से रिलेशंस ठीक होंगे। The order from April 1 is applicable for 6 months in Nagaland, while ASPA was removed from the jurisdiction of 15 police stations in 7 districts. It remains in place in 57 police stations, 13 districts. इस समय वो 13 districts में नागालैंड के है। The relaxation has been most substantial in Assam, where it has been removed entirely from 23 districts and partially from one, thus limiting its operation fully to only 9 districts. ठीक है, अब असम में से 9 districts में है। In Manipur, on the other hand, only 15 police station areas in 666 have been excluded from the disturbed area notification. Okay, and the act is still in force in, अच्छा मणिपुर में काफी ज्यादा है यार, 16 डिस्ट्रिक्ट्स में से 82 पुलिस स्टेशन इंक्लूड मतलब 16 डिस्ट्रिक्ट्स में है मणिपुर में, इंक्लूडिंग सेवरल हिल डिस्ट्रिक्ट्स वेदर और नॉट दे adjoin the international boundary. As things stand, the government decision to relax the application of the act in specific areas seems to stem from the reduction in violence and also administrative reasons rather than as a response to the burning question of whether the act is essential to security operation in these states which have experienced insurgencies of various degrees in the past. While this piecemeal gesture, piecemeal मतलब होता है कि छोटे छोटे एक्ट्स के छोटे छोटे एक्ट्स करना, ओके, किसी बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ कुछ देर के अंतराल पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे पीस मील देना. Gesture would be welcomed by the resident in these areas in particular. The popular demand for the repeal of the act in full from the 3 states remains unfulfilled. ये डिमांड है कि मतलब तीनों स्टेट से, आसाम, मेघालय और मिजोरम, असम, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों स्टेट से पूरी तरह से हटाया जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाया गया बट स्टिल काफी कम किया गया, जितना कम वो कर सकते हैं. Despite the vociferous protests from security forces for the retention of the act, human rights organizations, sections of civil society, अच्छा, security forces are actually protesting for the retention of the act. Retention means obviously the मतलब रहना ना, continued possession. Oh, I did not know this कि वहाँ पे जो security force है, they are saying कि the act should be in place. Okay, but the human rights organization, section of civil society and committees, including the 5-member committee led by retired Supreme Court Judge B.P. Jeevan Reddy in 2005, have steadfastly called for its repeal. अच्छा, Supreme Court के एक 5-member कमेटी जो लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने भी यही कहा है कि इसका रिपील होना चाहिए. The committee in particular had suggested that the act had created an impression that the people of the northeast states were being targeted for hostile treatment and that the UAPA, Unlawful Activity Prevention Act, could instead be suitably amended to tackle terrorism. The Supreme Court appointed Justice N. Santosh Hegde Committee in 2013, which investigated encounter killings in Manipur, suggested that the act must be properly reviewed every 6 months to see if its implementation necessary, but extensions of the purview of the act have proceeded as routine affairs. In 2016, the Supreme Court had also ruled that the armed forces could not be immune from investigation for excesses committed during the discharge of their duties, even in disturbed areas, in effect circumscribing the condition in which the immunity is applied. These beg the question again: why should the act remain in the statute? Okay, so there's just a demand for this act to be removed. Just let me have water, then we'll continue. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो कंटिन्यूअस
होगा अभी, मेरी खास वॉचिंग है नहीं, बट ये भी है कि आई थिंक कि यू नो आई शुड नॉट जस्ट, मुझे कुछ बढ़िया भी करना पड़ेगा ना, जिससे कि थोड़ा सा एंगेजमेंट रहे। अगर अगर if some of you are seeing just like I'm seeing, three people just they came and then they went away. So if some of you are actually seeing this and you want me to do anything, just write in chat. Okay, if you write in chat, you just let's talk about this, let's talk about that. I'm obviously okay to talk about anything. You want to talk about northeast or any political fees, जो भी what's going on, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, इंडिया का यूएन में क्या स्टैंड है ना, कैसे हमारे देश में इस टाइम अपोजिशन नहीं है, उससे क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस का क्या है, एनीथिंग यू वांट टॉक अबाउट, जीएसटी, है ना, जो भी है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई शुड टेल यू कि ओ वेट, वेट। सेकंड, पता नहीं क्यों मेरा, पता नहीं कैसे ये मेरी वीडियो चली जाती है रहकर। सम ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस देन प्लीज लेट मी नो। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। So this is left spending. The center must crank up capital spending if it wants to stoke the economy. यही सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से कि आपको capital spending बढ़ानी होगी। Center is actually increasing capital spending because all these highways and expressways and so many things are infrastructure building. This is good step for economy reboost. Official industrial data from February shows output in the 8 core sectors grew at the fastest pace in 4 months at 5.8%, aided liberally by a low base effect. Production had contracted 3.3% a year earlier. ठीक है, प्रोडक्शन जो है हमारे देश में 2021 में 3.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन जो फरवरी का डेटा बताता है कि हमारे देश के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल आता है, आईटी आता है, और मैन्युफैक्चरिंग आता है, बहुत कुछ आता है, ऑटोमोबाइल आता है। तो ये जो 8 कोर फैक्टर्स हैं, ये ग्रू एट द फास्टेस्ट पेस इन 4 months at 5.8%. However, when compared with January 2022, output in all of these sectors actually declined. Okay, फरवरी में कम हुआ है जनवरी के मुकाबले। एक मिनट बस देख लो कि सब कुछ ठीक है ना, लाइव राइट, यस, ओके। with the overall index contracting 5.3%. Electricity generation, a good indicator of business activity and which contributes about 20% to the 20% to the weight of the index, declined 3.3% from the preceding month. Electricity generation, जिससे कि पता चलता है ये indicator of business activity is going on, that also declined in February. Steel, another index heavyweight that feeds into various sectors of the economy from housing to cars to white goods and small scale engineering parts units, dipped 5.2% from January 2022. मतलब it is actually telling कि जनवरी से फरवरी में लिफ्ट मतलब वो डिक्लाइन हुआ है काफी सारी चीजें। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मेकिंग ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स एट अबाउट 28% इज द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी। अच्छा, हमारे देश ये रिफाइनरी प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो 28% है इस
core sector का. For a sector that facilitates other industries by powering mobility, output slates 8% subsequently. The Omicron wave early in the calendar year, coupled with rising prices, likely dampened demand, signaling uneven economic recovery from the onslaught of COVID-19 pandemic. The road to a full recovery looks long and bumpy, as the latest production levels are still below or barely above those seen pre-pandemic. Inflation, which has already breached the Reserve Bank of India's upper tolerance limit of 6%, 2 months running, is a threat to consumer demand. If demand remains muted or worse slips further, the domino effect upstream will only impact the core sectors further. The RBI's Monetary Policy Committee has its work cut out in a meeting later this week, when the panel will decide on the benchmark interest rate that could potentially influence inflation. It is trying to say कि inflation जो है RBI का एक ना upper threshold limit होता है. RBI puts a limit कि मतलब इससे अगर ऊपर इससे ऊपर inflation नहीं जाना चाहिए. अगर इससे ऊपर है तो it's अलग inflation, अगर इससे नीचे है तो it's not inflation, it's in control. तो वो अपर लिमिट इन्फ्लेशन ब्रीच कर चुका है. वो अपर लिमिट 5.8% के आसपास कुछ थी शायद से. अभी इस समय वो 6.3 6.4% है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन. तो वो ब्रीच कर चुका है और काफ़ी टाइम से ब्रीच कर रहा है. तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ है काफ़ी ज़्यादा, जो आपको भी नॉर्मली फील हो रहा होगा ना. पेट्रोल प्राइसेज एंड सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं धीरे धीरे. थोड़ी बहुत ही महंगी हो रही है बट हो रही है. मैगी महंगी हो गई यार, 2 रुपये है ना. तो 12 वाली मैगी शायद से 15 की हो गई, ऐसा कुछ है. दूध महंगा हो गया. तो ये चीज़ें महंगी हो रही है. और इन चीज़ों के महंगे होने से क्या होगा, कंज्यूमर डिमांड कम होगा. लोग खरीदना कम करेंगे, थोड़ा सा कम चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे. और जब कम कंज्यूमर डिमांड में कमी आएगी तो फिर ऑब्वियसली इकोनॉमी फिर थोड़ा ढीली ढाली चलेगी, है ना. सो इसके लिए आरबीआई कुछ करना पड़ेगा अपने अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मीटिंग में. At the same time, government spending, which could set the pace for overall growth in a stuttering economy, has not rolled forward. Capital expenditure grew a mere 0.8% February from a year earlier. Even though capex had risen about 20% in the April-February 11th month period, the center still had about rupees 1.2 lakh crore left to be spent in March, and it appears unlikely that the government would have met its revised capex target of 6 lakh crore for FY 2022. Though tax revenues have been robust, the government likely held back. मतलब it is saying, ये दोनों बात कह रहा है कि गवर्नमेंट ने स्पेंड भी किया, गवर्नमेंट अभी स्पेंड नहीं भी कर रही है. मतलब दोनों चीज़ें हैं. गवर्नमेंट पूरी तरह से स्पेंड भी नहीं कर रही, पूरी तरह से रुक भी नहीं रही है, कर भी रही है स्पेंड, लेकिन अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर रही है. ये भी है. गवर्नमेंट हर बार अपने बजट के समय टारगेट करती है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना करोड़, इतना लाख करोड़, 6 लाख करोड़ से उन्होंने किया कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में दे विल स्पेंड 6 लाख करोड़. तो वो टारगेट गवर्नमेंट अचीव नहीं कर रही है अपना, उससे थोड़ा कम कर रही है. जब पिछले साल 1.2 लाख करोड़ कम इन्होंने स्पेंड किया जितना अपने टारगेट से. Though tax revenues have been robust, the government likely held back on capital expenditure to help offset the lack of divestment proceeds it had budgeted for. Given geopolitical tensions, the stock market has been too volatile for the government to go ahead with the initial public offer for LIC. The sale of stake in BPCL has also not proceeded apace. Despite these roadblocks, मतलब सारी चीज़ें ना एक सर्कल है, पता है. आप डोमिनो इफेक्ट है. आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ऐसे होता है. तो इससे क्या है, जैसे कि आप देखो यहाँ क्या बता रहा है. गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया है, ठीक है. गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना हाथ हल्का सा टाइट रख लिया. और इस ये जो क्या कहते हैं पूरी इकोनॉमी है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन है. स्टॉक मार्केट डाउन है तो क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट को, जो चीज़ें बेचनी है उसका डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस चल रहा है. LIC का 10% स्टेक बेच रही है ना. उसका BPCL में जो अपना स्टेक बेच रही है, ये सारे वो अभी बेच नहीं रही. वो नहीं बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास और पैसे भी नहीं आ रहे, है ना. समझ रहे हो, सारी चीज़ें एक सर्कल है. Despite these roadblocks, the government may have little choice but to crank up capital spending early in the new fiscal if it wants to stoke the economy. This editorial is telling कि गवर्नमेंट को अभी अपना कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा if it wants to stoke the economy. The multiplier effect would not only benefit industries such as cement and steel, but may also help crowding private investment, spurring job creation, which has been the economy's Achilles. Not sure how to pronounce this. Achilles heel for a while now. Let's see what this means. Okay, Achilles तो नहीं है ये. This is a weak point or fault in somebody. A weak point in somebody. A fault has been the economy's fault for a while now. कह सकते हैं कि ये सही बात है. बहुत दिन से सुन रहे हैं हम ये चीज़ कि कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा. और बात भी सही है कि गवर्नमेंट जो कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो कैपिटल स्पेंडिंग कहाँ बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बढ़ा भी रही है, लेकिन थोड़ा और बढ़ाएगी. अगर जितना अपना टारगेट अचीव करेगी
तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो उससे सीमेंट और स्टील फैक्ट्री में तेजी आएगी। जब सीमेंट और स्टील फैक्ट्री में तेजी आएगी तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, बाकी और सेक्टर्स में भी धीरे धीरे तेजी आएगी। तो दिस वाज दिस, इट इज टेलिंग लिफ्ट स्पेंडिंग, ओके, अपने स्पेंडिंग को बढ़ाओ, लिफ्ट स्पेंडिंग। एंड यूएस क्रैकडाउन ऑन इंडियन स्टूडेंट, लेट्स रीड दिस। आई गेस दिस इज, ये ना मेरे मतलब ये क्या करते हैं ना, एक ऐसा आर्टिकल हमेशा इनका होता है जो कि पुराना, किसी पुराने टाइम का कुछ आर्टिकल होता है। नो आई एम नॉट श्योर, लेट्स रीड कि अभी का ये पुराना है, और उसमें वो डेट नहीं होती है तो मैं कभी पहचान नहीं पाता हूँ। इफ सम ऑफ यू नोज कि हाउ इट वर्क्स, so tell me. Let's see. A series of deportation, jailings and other forms of intimidation and harassment of Indian students who had taken part-time employment to pay for their education without permission from the US Immigration and Naturalization Service has led to a wave of fear in the Indian student community in this country during the last few weeks. Reports reaching here from Detroit, Michigan, which has an Indian student population over 400, say that during the last month, Indian students suspected of having violated visa regulations by taking part-time jobs were seized by INS agents at bus stops, in their homes and on the streets. Of the 100 students who now face proceedings against them, at least 2 had to spend 3 nights in jail because they could not produce the $2,000 bond required as security. The deputy director of the Detroit office of the INS said that these people had violated the law. They have taken part-time jobs without permission at a time when there is a lot of pressure from local labor unions and community groups because of the unemployment situation in the country. Let me just recheck कि अगर ये news अभी की है, Indian students jailed in USA for taking part-time job. Oh yeah, no, this is from 19, man. Let me just type the Hindu and then we will see. Yeah, see, this is from the archives. I don't, US crackdown Indian students, archive April from 1972. This is not today's news. मेरे को लग ही रहा था कि this does not fit in, और ये कैसे मुझे पता चलेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ लिखा रहता है कि आर्काइव है। मुझे बस इससे मैं बस गेस करता हूँ कि दिस इज इन आर्काइव। ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। So this was it. These were all the editorials of today. What we read about. हमने यूक्रेन के बारे में कम से कम 2 चीजें थी इसमें कि इंडिया को क्या करना चाहिए इस समय फॉर यूक्रेन, एंड इन दिस मतलब नॉट फॉर यूक्रेन, मतलब अपने लिए इस पूरे सिनेरियो में, इंटरनेशनल सिनेरियो में कहाँ ये फिट होता है, एंड अबाउट ग्राउंड वाटर एंड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ लेट्स जस्ट, ऐसे तो मुझे यहाँ पे इसको बंद करना चाहिए स्ट्रीम को, लेकिन लेट्स जस्ट सी व्हाट्स इन द front page, what are the big news of the hour right now. Maybe we get something. The Sri Lankan police fired tear gas water cannons to quell protests in front of PM Mahinda Rajapaksa's home. ये आपको पता ही होगा कि श्रीलंका के 26 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 26 के 26 ने आज रिजाइन कर दिया है, और वहाँ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पर है और बहुत हालत खराब है। फ्रेश कोविड-19 केसेस ड्रॉप बिलो 1000 फर्स्ट सिंस अप्रैल 2020। अच्छा, इस तरह की न्यूज़ जनरली तब आती है जब वापस से बढ़ने लगते हैं केसेस। तो अभी आपको पता होगा WHO ने नया वेरिएंट बताया है, XE रिकॉम्बिनेंट, यूके में मिला है उनको। कह रहे हैं 10% ज़्यादा तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन के मुकाबले। लेट्स सी क्या होता है। डियोबाज बीजेपी HQ विजिट, अ चेंज एम्ड एट प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट विद दिल्ली प्लेयर्स। ओके, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया पे दौरे पर है। Vinay Mohan Quatra appointed India's new foreign secretary. Oh, India got a new foreign secretary. Vinay Mohan Quatra. India's envoy to Nepal. ये पहले नेपाल के एम्बेसडर थे। India's ambassador for Nepal थे Vinay Mohan Quatra was on Monday appointed as the new foreign secretary, succeeding Harshvardhan Shringla. So अब हर्षवर्धन श्रृंगला नहीं है, who is retiring this month end. Mr. Quatra, 1988 batch IFS officer, has held positions in India's diplomatic mission in Washington DC, Beijing, and has also served as joint secretary in the Prime Minister's office. Oh, then he's good at this place ना, मतलब as an ambassador USA में भी काम कर चुके हैं, चाइना में भी काम कर चुके हैं। The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Mr. Quatra and वगैरह वगैरह. Prior to his Nepal, he was ambassador of India to France. Nice. So Lakhimpur SC wonders why Uttar Pradesh did not appeal Union Minister's son's
bail after vehemently opposing it in High Court. Supreme Court on Monday asked why Uttar Pradesh missed out on filing an appeal against bail granted to Ashish Mishra, prime accused in the Lakhimpur Kheri case and the son of Union Minister, despite admitting to the gravity of the crime and in spite of special investigation team urging it to do so. The court is hearing the appeal made by Vidhi Rando. You know, politics there. I don't like to go into state politics. International politics is good for me, नॉट स्टेट पॉलिटिक्स. स्टेट पॉलिटिक्स का क्या है ना, मैं इसलिए नहीं जाता बिकॉज ये आती आती रहती है ना. जो अभी स्टेट पॉलिटिक्स में बड़ी बात है 2 साल बाद नहीं होगी, रेलेवेंस भी नहीं होगा उसका, 1 साल के 6 महीने बाद उसका रेलेवेंस नहीं होगा. सो इस सब पढ़ के क्या है. नो इंक्रीज इफेक्ट बाय गवर्नमेंट इन मेडिसिन प्राइसेस. इमरान खान नॉमिनेट्स पाकिस्तान फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं. All cabinet ministers quit in Sri Lanka. So let's leave this space. We have read Elon Musk takes 9.2% stake in Twitter. What? Nice, man. Tesla CEO Elon Musk has taken a 9.2% stake in Twitter, purchasing approximately 73.5 million shares, according to a regulatory filing Monday. Mr. Musk's stake in Twitter is considered a passive investment, which means Mr. Musk is a long-term investor that's looking to minimize his buying and selling of the shares. Yet in recent weeks, Mr. Musk has raised question about free speech on Twitter and if failing to adhere to its basic principles undermines democracy. अब आएगी actual democracy Twitter पे. I hope so. Because Elon Musk ने कितनी बार ट्वीट किया है about free speech on Twitter कि किस तरह से free speech नहीं है, बहुत कुछ नहीं है. He has also pondered starting up a rival social media network. Industry analysts are skeptical about whether the mercurial CEO would remain on the sidelines for the long. We would expect this passive stake as just the start of broader conversations with the Twitter board management that could ultimately lead to an active state and a potential more aggressive ownership role of Twitter, Dan Ives of Wedbush Securities said in a client note early Monday. Twitter's stock surged 25% before the opening bell Monday. Early last month, Mr. Musk asked the federal judge to nullify a subpoena वगैरह वगैरह. Okay. सही है. So Elon Musk bought 9.2% stake in Twitter. That's good to know. Cool to know. Nice. Okay, then there's nothing more. This was the cartoon. This is cartoon for March 29, but I really like this cartoon. Now I'm ending the stream. Thank you for these 4 people and this one concurrent viewer, and I'll just now I'm ending this. And if you really like this stream, just come back. I'll do this again same time in the evening. And just अगर आपको कुछ और चाहिए मुझसे, just chat पे करो. We can talk about anything in the world that's going on, anything, seriously. So just do it. Chat पे मुझसे बात करो. We can talk and we can discuss about a lot of things. I'll just join you on the Discord and everything, and it can be good. We need to talk about a lot of things. So let's end this. Bye bye. कल मिलते हैं. Bye bye. So why we can successful.